a good story, pay attention, listen. Any day, say the word on my way. झालं पुढं तुला रगड्या भीती कशाची परवावी Life is very short, Nanda. All will be well. Oro lo quiere metido, lomba lomba. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അക്ഷരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് വായന ദിന ആശംസകൾ. മലയാള ലോകത്തെ അക്ഷരത്തിന്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ശ്രീ പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19 നമ്മൾ വായന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. വായന എന്നത് ഒരു അറിവിന്റെ ഉറവിടമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വളർത്തുന്നതിൽ വായന വലിയ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. എത്ര വായിച്ചു എന്നുള്ളതിലല്ല, വായിച്ചതിൽ വെച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വായന ഒരു ശീലമാക്കാം. വായനയിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാം. അതിന് ഈ വായനാ ദിനം ഒരു വേദിയാവട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. A very warm good morning to all. Hearty greetings to all my dear friends on the occasion of this reading week. Today, I'm here to share my experience of reading the worldwide bestseller Alchemist by the Brazilian author Paulo Coelho. It tells the story of a young shepherd boy who goes on a journey and quest for treasure to realize his personal legend. Along the way, he runs into many obstacles and his journey quickly turns into an adventure. The constant theme in the story is to pursue our dreams and to live our life as our heart and soul desires. Some of the most important lessons are: no matter what you do, but make sure that you do it because that is what your heart and soul desires. Secondly, you will fail, but don't give up in the process. You should live each day so that you get one step closer to what your dream and destination is. And when you want something, the entire universe conspires in helping you to achieve it. And when you want something, you have to be prepared to risk it all. You must try to get rid of all obstacles and to ignore your fears. The secret of life is, though, to fail 7 times and to get up 8 times. Be inspired, because it is only up to you who could build the best possible version of yourself. Like the young boy, we each and every one face so many obstacles in our life that we didn't plan or account for. We must understand that each obstacle is a stepping stone, an opportunity to build on, and a step closer to our personal legend. So I hope all of us can make use of these important lessons in our life so that we could mold the best possible version of ourselves, as well as we'll be able to live our lives as our heart and soul desires. Thank you. हाय दोस्तों, मैं हूँ टीना। हम सब जानते हैं कि 19 जून से 25 जून तक रीडिंग वीक माना जाता है, तो मैंने सोचा कि आप सबको मेरे रीडिंग हैबिट की शुरुआत की कहानी सुना दूँ। सबका शुरुआत हुआ था मेरे और मेरे दोस्त के बीच की लड़ाई से। हम दोनों ने शर्त रखा कि हम दोनों एक हफ्ते के लिए फ़ोन और टीवी नहीं देखेंगे। दूसरे दिन लाइब्रेरी पीरियड के समय मेरे टीचर ने मुझे एक पुस्तक दिया। न जाने कब पीरियड निकल गया और मुझे वो पुस्तक पूरा पढ़ने का आग्रह हुआ, तो मैंने निर्णय लिया कि एक हफ्ते में मैं 3 पुस्तक पढ़ूंगी। और आश्चर्य से मैंने एक हफ्ते में 4 बुक पढ़ा। वो एक हफ्ते के बाद मुझे यह पता चला कि एक पुस्तक से हमें वह पुस्तक के लेखक या लेखिका के जीवन के बारे में पता चलता है। हमारे कल्पनाशील, एकवचन, संज्ञा आदि का सुधार होता है। तो दोस्तों, याद रखना, अध्ययन हमें आनंद तो प्रदान करती ही है, अलंकृत भी करता है और योगी भी बनाता है। Morning teacher.
teacher and all my dear friends. I am Neha Suraj of class 12. Today I am going to talk to you about Reading Day. So what is Reading Day and when is it celebrated? June 19th is observed as National Reading Day in order to honor the life and work of P.N. Panikkar, who was a teacher in Kerala. So let me ask you some general questions on Reading Day. First question, who was the father of library and literacy movement in Kerala? I'll give you 3 seconds to think. 1, 2 and 3. The answer is P.N. Panikkar. Second question, when was P.N. Panikkar born? Answer 1, 2 and 3. The answer is 1st March 1909. Third question, where was the first library of Kerala established? 1, 2 and 3. The first library of Kerala was established in Thiruvananthapuram. Fourth question, when was the first National Reading Day observed? Answer 2 and 3. Did you get this right? If yes, then the answer is 1996. Fifth question, the slogan of Thiruvidampur Granthashala Sangam is 1, 2 and 3. Did you get it? The answer is read and grow. Now time for the last and final question. The question is, P.N. Panikkar's dash anniversary is celebrated as Reading Day. Answer is, P.N. Panikkar's death anniversary is celebrated as Reading Day. If you get all the answers right, then good job guys. I hope you enjoyed this short quiz. Thank you for having me here. Have a good day. नमस्ते, मैं हूं 12वीं कक्षा की अखिला अजय। वाजन सप्ताह के इस दौरान मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मेरी जीवन यात्रा नामक पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रामेश्वर जैसी छोटी सी जगह पर जन्म लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन राष्ट्रपति बनने तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन असाधारण संकल्प शक्ति, साहस, लगन और श्रेष्ठता की प्रेरणाप्रद कहानी है जो आजकल हर युवा जानना चाहते हैं। उनके जीवन के बारे में बेहतर शायद ही और कोई जान सकते हो, इसलिए उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपनी संघर्ष की कहानी को शब्दों के रूप में पिरोकर एक किताब का रूप देकर देश के युवाओं को एक मूल्य उपहार दिया है। इस किताब में उन्होंने अपने कुछ खास पलों को लिखते हैं और बताते हैं कि किस तरह उन पलों ने उन्हें लगातार कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया। बंगाल की घाटी में स्थित छोटे से गांव में बिताए बचपन से वैज्ञानिक बनना और राष्ट्रपति बनने तक के सफर में आई कई बाधाओं, संघर्ष और उन पर जीत पाने आदि तेजस्वी बातें उन्होंने इस किताब में बताए हैं। मेरी जीवन यात्रा अतीतों की यादों से भरी बेहद निजी अनुभवों की ईमानदार कहानी है, जो जितनी असाधारण है उतनी ही आनंददायक और उत्साह से भर देने वाली है। दोस्तों, ये किताब बहुत अच्छी है। उनके जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये किताब पढ़िए। धन्यवाद। Working on the weekend like usual. अभी तो आई एक ही साल हुआ, मेरा जैसा पड़ा एक ही बार। We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. What if I told you that I loved you? Don't think that I'll be as we were always in trouble. Let me sing a good story, pay attention, listen. Any day, say the word on my way. Today a Reader, Tomorrow a Leader by Margaret Fullering. Reading is dreaming with open eyes.
Good morning to one and all. Respected principal, teachers, and my dear friends. As we all know, it's a red letter day for all of us as it's National Reading Week. India celebrates National Reading Day annually on June 19th. It is celebrated to honor the father of the library movement in Kerala, the late P.N. Panikkar, whose death anniversary falls on June 19th. In 2021, 26th Reading Day is being celebrated. The week following, 19 June, will be observed as Reading Week, and the entire month till July 18 will be observed as Reading Month. The motto of Reading Day is Read and Grow. This brings me to the end of my presentation. Be an eager beaver in reading. Thank you. വിനോദ് പൂവക്കോടിൻ്റെ കാട്ടുപൂവ് എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികൾ. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ പുഞ്ചിരി ഒന്നു മാത്രം. മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ പുഞ്ചിരി ഒന്നു മാത്രം. കൃഷ്ണ തുളസി കതിർത്തുമ്പു മോഹിക്കും നിന്റെ വാർമുടിച്ചുരുളിലെത്താൻ. പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത പൂവായ ഞാനും മോഹിച്ചിടുന്നു നിന്നരികിലെത്താൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജയ്ക്കെടുക്കില്ല താനേ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജയ്ക്കെടുക്കില്ല താനേ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. വിടരും മുമ്പേ പൊഴിയുന്ന ഇതളുള്ള പൂജയ്ക്കെടുക്കാത്ത കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. ഇഷ്ടമാണിന്നൊന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി നിത്യവും നിൻ മുമ്പിലെത്തിടുമ്പോൾ നിന്റെ കൊലൂസിൻ്റെ നാദങ്ങളിൽ ഞാൻ താനേ മറന്നൊന്നു നിന്നിടുന്നു. ഒന്നും പറയാതെ അറിയാതെ പോയിടുന്നു. Pay attention, listen. Any day, say the word on my way. June 21 is marked as the International Day for Yoga to celebrate the ancient Indian art of healthy living. UN has marked this day to raise awareness to people all over the world about the benefits of practicing yoga. Yoga is a physical, mental and spiritual practice which involves physical poses, concentration and deep breathing. It also helps in improvement of strength and flexibility. Slow movements and deep breathing techniques helps to warm up the muscles and build strength. It helps in development of mind and body through asanas and breathing techniques. Thank you. Life is very short.